entertainment medium even bigger than movies. The same has not happened in India yet. And of course, we talked about infrastructure. There is no 3G, there is no broadband. And as we know that all of that is getting fixed. But the most important thing which is finally going to drive with all the broadband and all the great mobile phones we have is amazing content and amazing IP. And I think India Games' partnership with Ra.One and Red Chillies really is going to bring the top of the world IP, the best IP to massive consumers to do it. The second thing is the mass audiences. So India is not just about one platform. India is about mobiles, India is about television sets, India has people who have iPads, who are accessing Facebook. So our strategy was to go and target as many platforms as possible where we can get the gaming experience, be it the low-end phones to the smartphones. So whether it is Nokia, whether it is the iPhone, whether it is Android, we are covering them all. And what more, most of this experience is what we are getting for free. And imagine that you can now play and enjoy the best quality games by just downloading it on your phone or playing it on your TV set. The other interesting thing in this entire association is how we are working in creating a franchise. I think Ra.One and the brand and the superhero brand we feel is not only appealing to Indians or India-related people, but I think it's global. And we are targeting pretty much the global audiences with the game. And as you see the content which you have done, you will realize that. Lastly, I want to talk to you about our team which has built the game. The entire team who's involved in creation of such high quality IPs very much here. A lot of our teammates are here. I would encourage members of the press to later on even interact with them and get an idea of how these games are created, because this is truly a world-class experience. So thanks a lot. Really excited to be here. Thank you, Vishal. I'm personally really excited to play the game right now. But before that, to further elaborate on this association, I'd like to call upon the digital and merchandising head of Red Chillies Entertainment, Shailja Gupta. Hi, everyone. His associate just said that once Vishal is on stage, there's no stopping him. But I think a couple of minutes was not that bad. Moving on, obviously he's given a basic idea about the Ra.One Association and the franchise building exercise. What I want to focus today are the 2-3 games that have been developed by India Games. One is the social game. Why did we decide to develop a social game for Ra.One? It was basically something, Shahrukh is a gamer, everybody knows that. And he's excited about this whole industry that has taken on everybody's lives. It's just like, with all the social games that are there on social media platforms like Facebook, etc. So keeping that in mind, Jeevan, which is a character which will probably go beyond the first film of Ra.One, and there'll be Ra.One 2, 3, and obviously a lot more digital comic books. Keeping that in mind, social game just made a lot of sense. And when Shahrukh comes on stage, he'll probably give you a much better idea and in a much better way. So that is social game. The second is a Jeevan adventure. There's a little character called Little Jeevan, and there's a casual game which is another area that we wanted to hit, because apart from the action games, there is a casual game. And the third is the DTH, the 2D phones, Java games. We've tried to encompass all the different platforms to reach out to as many audiences as possible. And we have a little bit of a demo for you here. Have a look at it. Hopefully it'll give you an idea, and maybe after the show is over, you'll be able to play some of the games. I think they've set it up for you guys. Thank you so much. Play the AV, please. Ra.One जीवन का पावर एक है, लेकिन Ra.One थोड़ा स्ट्रॉन्ग है. Ra.One in the game is designed as a 10-verse mind put into one person, and how he would react under duress or under stress. The idea is to say that 10-verse kind of villains rolled into one is Ra.One. जीवन की जो पावर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी से बना, बिजली से बना. वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, लेकिन देख के इमेजरी रिक्रिएट कर सकता है. He can give huge 400 or 4040 volts power surges, megatron blasts. From his hand, he's got some electricity generating gadget. His shoes can stick on surfaces. He can do everything that electromagnetic waves are capable of doing. He can obviously blow far distances. He can jump a little in a parkour style.
बनता नहीं सुपर हीरो मसल या मेटल पार्ट से, बनता है सुपर हीरो सिर्फ अपने हार्ट से. Alright, the villains have arrived. We need a superhero right now. Where is G1? We need G1 right now. That was truly Jeevan's style. May I please request all of you to come together for a photo op? Can you please have the iPad get out? Should we put this up? Thank you and good afternoon. Thank you. First of all, let me just thank all of you here to be present at this very, very important occasion for all of us, actually. I want to thank Vishal and everyone at India Games, the UTV India Games, and every developer, every worker, every producer who's really worked very hard in making these games. Like I've been saying, Ra.One has been a special platform, not only just as a film, for an actor, for a producer, from a director's point of view. It's just a movie that we've made to entertain everyone. But because of the unique nature that it belongs to a genre where a lot of people, whether from the background of little children or little more grown-ups or even younger generation, can participate on different levels in the whole 360 degrees entertainment that we're trying to provide with Ra.One. That's why we keep launching so many new things with Ra.One, not because we're just trying to market it. So this being one of the most essential aspects of the movie, because I have this love for games, whether they're social games on PC, on Android phones or regular telephones. We all have been getting slowly attached to this kind of entertainment, and I think the time is not far when movies will have to start making content which is going to be friendly with these platforms also. And India Games and our company's association, personally also, we've been associated with a lot of things. We've tried many attempts at trying to bring games from every part of entertainment that I've participated in, be it cricket, be it movies in the past. But I think this genuinely is the biggest step forward. And every time I've spoken to the team from India Games, all of them sit down, are very excited. And India Games genuinely being the biggest gaming company that we have, they're all very excited to try and produce entertainment on game levels for different platforms, whether it's tablets, PCs, telephones, and try and increase the reach for our films, plus also bring in more and more ways for everyone to enjoy these devices that we all carry all the time now. So I thank them for producing these wonderful games. I know we will give you a whole detail as you ask the questions as to what kind of games are there, but roughly there is one, the social game, which I think is the biggest step forward. It's called the G1 Genesis, where of course like how children and youngsters nowadays play, and I think there is some, what is it called, microtransactions also, that you can buy guns and tools to, can I play it here? Okay, so I'm just going to try and play this. Give it up for SRK, ladies and gentlemen. This is the cut scene. This is how the game begins. I'm sorry, I'll ask Shelja to hold my telephone, my microphone. I'll hold it.
Okay, and this is a control where obviously Jeevan can run around, and these are the guns. You can play it in different environments. This is the yard environment, the train yard environment. I'm a little bad with this. मतलब ये पीछे वाला जो है बहुत मार रहा है मेरे को यार. I hope I can impress you guys with winning this level at least today, but okay, so that's okay, so I won this one. So this is how you can buy different guns. I think the youngsters will understand this more. You can buy different guns, and the same game that you just saw here can be on most of the mobiles, and then on the PC also that you can play. So all the platforms are more or less covered with this, and they have casual games also for the telephone and the tablet, which are also quite interesting, which I can play a little better, which is here. So I'll just give you a little. Is this it? They also have the game on the DTH, so the reach is, yeah, I got screen pay. Okay, this is, I'm sorry, I don't know if you can see it from here. This won't play on the big screen, but this is a casual game like, a little like Doodle. So you have, कहाँ पर? यहाँ रख. हाँ. Okay. So I don't know, I'm sorry, I'm not being able to play it, but it's kind of like the Doodle where Jeevan goes up and of course I've just been shot dead. So just the whole point was to let you know that each platform is being covered in a very, very big way, and we at Ra.One are really thankful to UTV India Games for giving us this opportunity, and I hope everyone, whether they come onto the Ra.One site, whether they go onto these regular sites, there's a specific app where, I'm sorry, I don't understand most of it. I'm hoping somebody does that. But there are specific apps which tell you actually what all can happen, and of course give you the information about the movie. It's a movie about the digital world. It's a movie about televisions and computers. So I think it's only befitting that we produce this kind of entertainment, and all-round marketing also has been designed in a way that everyone can enjoy different aspects of this movie. So thank you everyone who's been involved. And if I can get the guys who have developed all this instead of playing around to come sit down and answer some serious questions. Thank you so much, Vishal. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. I'm sure after watching him play the game, even you guys want to come and try these games, so don't worry. You can do that towards the end of the event. You can come and try out the games at this kiosk. But for now, we throw the conference open for you guys to ask any questions. But sir, before that, I have one or two questions to ask you, if you please. So firstly, it's an amazing initiative, but how do you think is this game going to help the movie? How do you think this game is going to help the movie? People keep talking about creating marketing by just putting up posters, or they keep talking about, just letting everyone aware by interviews. I think the time has come. If a movie lends itself, we have so many different areas of interest that we can even make the marketing very entertaining. So when some kid or some youngster decides to take a look at any of these games, to me personally, what happens is not only are they playing a game and enjoying themselves, but besides that, they are getting some knowledge of what the film would be based on. Like in this case, they have the 10 different avatars of the villains who get together to become Ra.One. Now that is the essence of Ra.One, कि 10 सबसे बुरे जो थॉट्स हैं या जो कैरेक्टर्स हिस्ट्री में कभी पैदा हुए हैं, उन सब का मिश्रण करके रावण बनता है. तो जो एक मिथोलॉजिकल 10 सिर वाला है, हमने 10 सिर नहीं बनाए, 10 बुरी उसमें खामियां डाल दी हैं. So a kid or a youngster gets aware this is how the villain is designed. So the information about the film goes out to people in the most entertaining way. And if you assume that the film is good, and inshallah if it does well, then I think you get attached to stories. And it's really nice that, like, I'm very attached to, say for example, the World Cup football. So when the fever is on, I like to play the game and be inside that part of experience. So this would help people experience that, and I think it's a great tool to make marketing very entertaining. And of course, the reach that India Games has, about 100 million people. Okay, if they combine all the platforms, there are more than 500 million people that these games reach out to. So even if मेरे लिए अगर उसमें से 1/3 भी आ जाए फिल्म देखने के लिए तो बहुत है. And
And so how important do you think was to go social with this game? This is a very different concept of going social with a game. So how important do you think was that? Whenever I look around now, more than, I know all the games are very important, kids play in different platforms, but when I see my children or I see other youngsters, I think the social gaming, social media itself has become a very huge part of our lives now. So it would be wrong now to ignore it. I'm on Twitter, I'm on whosay.com, I'm on Facebook, and, on G+, and so I'm really social. And, so I just figured out that, if you have such social platforms and then you introduce some kind of entertainment. I see my little girl playing things on the social gaming, simple, straightforward, pink-looking games. But it's an interesting way to teach people. It's an interesting way to reach people. And then when you're talking about cinema, it's about having a social gathering. It's about having everyone coming together and enjoying an experience which is socially done. So it's an experience of getting together. So I think it's hugely important. And I would say not only for Ra.One, a lot of films, a lot of media, a lot of television stuff, even serials. I think they could give it a shot and have a further reach with social media and social gaming. Thank you. Friends, you are now open to ask any questions to Shahrukh. Hi, Shahrukh. Shahrukh, yeah, One by one, please. Hi. Yeah. On the left hand Dark side, glasses, yeah. yes. Sohail. Yeah, Sohail. Shahrukh, what your contribution in this game, and as you were talking about your kids, so did you consult them also, because they are also very gamely, I mean to say game friendly. तो आपने उनको आर्यन या सुहाना को भी थोड़ा बहुत कंसल्ट किया कि अगर एक गेम डेवलप कर रहे हैं तो एनीथिंग या कंट्रीब्यूशन फ्रॉम? हाँ, मेरा बेटा अभी कल या परसों ही पूछ रहा था यार कि नई गेम आ गई, और वो लोग जो हैं बड़े एडवांस लेवल पे चले गए हैं, क्योंकि आई थिंक लड़के थोड़े ज्यादा अटैच होते हैं गेम्स के साथ, तो वो ज्यादा गेम्स वगैरह ढूंढते रहते हैं. तो जो दूसरी वाली थी कैजुअल गेम, वो मैंने अपनी बेटी को भी दिखाई थी. शैलजा ने मुझे एक फोन पर और उसके आईपैड पे डाउनलोड करके दी थी. तो दे लाइक इट अ लॉट. एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझको देखकर खुश हो रहे हैं या उनको लगने लगा है कि यार ये तो घर का हीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये गेम में कोई दूसरा अच्छा बेटर हीरो हो, बैटमैन या कुछ. सो आई कैंट मेक आउट, बट आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि मैं उनके पास नई गेम्स, आज ये आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये लॉन्च हो जाएगी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक, game.ravanmovie.com पर. और सो आई थिंक मैं घर जाके थोड़ा सा उस पर लॉग इन करूंगा, तो आई फील वेरी प्राउड. I hope the game is enjoyed by them. The way I've seen it, मैंने थोड़े से इनपुट्स दिए हैं क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत गेम्स खेलता हूँ, बच्चों को खेलता हुआ देखता हूँ. So I've tried to make it as universal, appealing as possible to even my children. If my children like it, I'm assuming a lot of other children will also like it. Once again, guys, I have one surprise for you. The two best questions today will get some special Ra.One merchandise. So try your luck and ask some good questions. Is the mic there? Shahrukh? Hello, Shahrukh, the question is from here. Here. Jyoti. As a layman, I just want to know whether is there a revenue sharing model you have with India Games and Red Chillies, or a common man who is a fan of Shah Rukh Khan can go to the PC and play the game for free? All games are free. They are downloadable free, I think. Except जो ये सोशल गेम है, इसके अंदर जब आगे जाते हैं, so there are some micro transactions that you do. मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, फिक्र मत कर. कुछ ऐसी बात नहीं बोलूंगा. And there will be और जो कैजुअल गेम है, जैसे गेम जब डाउनलोड करते हैं, so I think एक छोटा सा उसमें एक प्राइस अटैच्ड होता है. Most of these apps, I don't know if one is aware or not, but most of the apps that we download, लगता है टेलीफोन पे हर चीज ऑटोमेटिकली मुफ्त में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक छोटा सा चार्ज होता है. So I think it has been, I'll tell them to tell you the exact pricing, but we've tried to keep it obviously at a level where regular games are and everyone can go and play. हालांकि जैसे लेवल बढ़ते रहेंगे ज्योति, तो उसके अंदर जो गन्स और चीजें हैं, आप पहले लेवल तक ही खेल लो यार, हमारी औकात उतनी है, पहले लेवल तक खेल के हम छोड़ देते हैं, आगे तक वो बड़े बच्चों को जाने दो. बट देयर इज अ रेवेन्यू शेयरिंग. आई एम रियली सॉरी, आई एम very bad with business, so if you want to know how we are sharing revenue with them, मुझे भी मालूम पड़ जाएगा, इनसे पूछ ले. विशाल, हमको बता दो, कुछ पैसा मिलेगा. One more question for the producer Shah Rukh Khan. What is the percentage of money you are going to invest on this compared to the cost of the film? I have not invested any money into India Games. As a matter of fact, every time when they come forward with an idea or a thought, I think the biggest benefit that you get working with India Games is that they do all of this free of cost for you.
They develop it for you, and actually that's the whole setup of the company. They have such talent around the world now that they take all this and this service they give you free of developing the game. Post that, obviously they have to make up their costs. They have to make up, run a company. So I'm sure there are different methodologies to be able to get that back. Plus, if there is a profit in games, then we share that with them without really having to invest in it. So it's quite a win-win situation for a producer like me, or we even tried it with cricket, which we could not pull off because time नहीं था उस वक्त. लेकिन I think एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, इनका एक्सपीरियंस मिलता है, गेम डेवलपमेंट फ्री में होता है, और अगर चल जाए तो I think there is some revenue also that can come through. But if you want to know the details, you can ask Vishal. Yeah, as Shahrukh said, the game development is free, but actually it's not free. We are investing this money in creating this game. And the model is, the new word is called freemium, which is we give you the game for free to try. You can either play a few levels, or in the case of the social game, you get a few limited powers of G1 to play the game. But as you want more powers, you can buy, and the power can be as cheap as 5 rupees and as expensive as 500 rupees. So depending on what power you may want to use, that may come. And of course, we then have a revenue sharing arrangement between us and Red Chilli. So it's a fairly established model, and we believe that IP owners who are creating world-class IP, this is one of the best ways for them to exploit it. And tell me frankly, to what extent has Parle G subsidized your product? So, of course, we have Parle as our in-game advertising sponsor. It's again a very unique thing where the power which is being used inside the game is actually Parle G, and they are one of the partners. Of course, advertising revenue for gaming is much smaller in percentages. Our consumer revenue will be much larger. So, yeah, advertising revenue would be there, but we believe consumer revenue will be larger. अच्छा, गेम के अंदर गोलियां लगेंगी तो अभी जैसा बता रहे हैं विशाल, एक हेल्थ पैक है, उसको अगर दे दोगे तो जल्दी से मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा. ये अच्छा है बॉयफ्रेंड्स के लिए, हस्बैंड्स के लिए, गर्लफ्रेंड वगैरह मारे भी तो जल्दी से हेल्थ पैक पहन लो तो ठीक हो जाओ. तो तुम भी याद रख लेना, कभी कोई लड़की वड़की परेशान करे, थप्पड़ मारे बदतमीजी के लिए, तो जल्दी से हेल्थ पैक पहन के वापस. सो दैट्स वन गुड थिंग. सो आई वोंट डाई इन दिस गेम, दैट्स वन थिंग. तो किसी भी लड़की को रोना नहीं पड़ेगा. मैं तो ये उम्मीद करता हूँ लड़कियां ये गेम खेलें पहले यार. नॉर्मल लड़के ही खेलते रहते हैं ये वाली गेम्स. Shahrukh, your association with Bollywood Hungama has also been for a long time. What was the reason to go with UTV? In fact, like they must have approached you also for this particular thing. So, I think जो गेमिंग का जो रीच है और गेमिंग की जो एक्सपीरियंस है, obviously I mean these are all companies we've been associated for years and they're all friends, but I think जिस लेवल पे हम Ra.One के लिए गेमिंग करना चाह रहे थे, I think वो to be really honest, विशाल met me before and रॉनी के साथ बहुत पहले, और हम बहुत I think डेढ़ साल इवन पिक्चर की शूटिंग से पहले हमने बातचीत करना शुरू की थी, क्योंकि ये 2-3 महीने में नहीं डेवलप होती. बहुत जैसा इन्होंने बोला, इन्वेस्टमेंट भी लगता है, वक्त भी लगता है, और फिर फिल्म की कहानी को लेकर थोड़ा सा उस पर बेस करना, जैसे इन्होंने कैरेक्टर्स भी बेस किए हैं तो हमारा सूट जब तक आया है. सो आई थिंक वी स्टार्टेड एट अ वेरी अर्ली लेवल विद UTV India Games. Plus, I personally feel that for this movie, this kind of bigness and variety in games was necessary, which required that kind of investment plus time. So India Games was really forthcoming, and Ronnie is also an old friend, and they had shown me what all they've been doing and the level that we can reach. और ये games जो है बहुत high level की हैं, मतलब they are not जो 2-2.5 साल पहले ऐसे strict drawing की होती थी. So they are becoming better in terms of graphics, in terms of movement, in terms of smoothness and look. So I just felt that this was the right platform at that point of time to start off with. Shahrukh, I have a question, simple one, 2 questions actually. One over here. Shahrukh, here. Here. It's okay. Hi, Shahrukh. All right, so 2 questions. One, is there a multiplayer aspect to the game? 2, that what does the storyline of the game, how does it fit into the movie? Is it a prequel? Is it a sequel to the movie, or is it going along with the movie? हाँ, जो बेसिक
जो सोशल गेम है, आई थिंक नॉर्मली मल्टीप्लेयर ऐड होने वाला है अपग्रेड के अंदर. अभी आई थिंक सिंगल प्लेयर है, और बट आई थिंक सोशल गेमिंग के लिए दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू बी एडेड, सो दे विल बी एज द अपग्रेड कम्स. और मैंने एक कॉमिक बुक लिखी है, जो हमने ऐसे सोचा था कि पिक्चर के अंदर जो गेम है, वीडियो गेम जो चल रही है, उसकी कहानी क्या है. तो उसकी जो स्टोरी है वो इसमें नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया जो है कि जो रावण है वो 10 बुराइयों से बना है, और जीवन जो है वो गुड वन है, अच्छा है. क्योंकि मैं इस आइडिया को बड़ा बेसिक रखना चाहता हूँ. जो हमारी फिल्म की कहानी है उसके अंदर बच्चा जो है मेन है, जो बीवी हैं, जो करीना रोल प्ले कर रही हैं, वो बहुत मेन कैरेक्टर हैं, और जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ शेखर, वो बहुत मेन है. उन तीनों को हमने इसमें टच नहीं किया है. हमने बेसिकली सुपर हीरो और सुपर विलन के बीच में जो कश्मकश या लड़ाई या जंग होती है उसको हाईलाइट किया है, बिकॉज नॉर्मली दीज गेम्स आर अबाउट शूटिंग एंड हिटिंग एंड बीटिंग एंड ट्राइंग टू क्रॉस डिफरेंट लेवल्स. सो आई थिंक द स्टोरी लाइन का एक बेसिक आइडिया कि सुपर हीरो फिल्म है वो है, बट मेन स्टोरी मोड ऐसा नहीं है कि जो मूवी की प्रीक्वल या सीक्वल है. बट टू बी रियली ऑनेस्ट, या इफ the film is liked by people, I would really like to go there and try to make a prequel or a sequel on the game first and see and test it, how people like it. खान साहब, सर रावण की म्यूजिक लॉन्च से लेकर अब तक आप हर दूसरी जगह जा रहे हैं, फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. अभी कल भी आप कहीं जाएंगे, फिर परसों भी आप कहीं जा रहे हैं. आराम कब करते हैं आप? पहला सवाल. दूसरा ये है कि हर जगह आप ही मौजूद हैं. अर्जुन रामपाल का हम सबको पता है कि रावण का लुक आप शायद दशहरे के दिन अनवेल करेंगे, लेकिन करीना क्यों नजर नहीं आ रही, उसकी वजह ही बताइए. करीना यार परसों थी हमारे साथ दिवाली के एक फंक्शन पे. वो आई थिंक रोम में है, जहां तक मुझे उनके स्टेटस से मालूम है. और वो बेचारी मुझको जब भी मैं कोई फंक्शन पे जाता हूँ फोन आता है कि शाहरुख कैन आई कम अलोंग. मैं थोड़ा इटली से आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. वैसे ही मैं लेट पहुंच रहा हूँ, तुम अगर इटली से आओगी तो और भी लेट हो जाएगा. सो आई जस्ट थॉट दैट आई बट शी विल स्टार्ट ज्वाइनिंग मी. आई थिंक हम एक सिटी टूर पे जा रहे हैं. और टू बी रियली ऑनेस्ट, हमने जो टाई अप्स किए हैं, मैं बहुत सच्चे दिल से बता रहा हूँ, ये एज अ प्रोड्यूसर किए हैं मैंने, और एज एन एक्टर, एज पर्सनल लेवल पे किए हैं. कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है कि मैं सब एक्टर्स को जमा करके मंच पर ले जाऊं, जो एक रेगुलर मार्केटिंग के स्ट्रक्चर्स नहीं है. बट अर्जुन, अरमान, जैसे मैं अरमान को उस दिन लिटिल चैंप्स पे ले गया, मुझे लगा वो बच्चों का प्लेटफॉर्म है. मुझे उन्हें तकलीफ देते हुए बुरा लगता है कि हर प्लेटफॉर्म जो एक प्रोड्यूसर का प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने हमारे पार्टनर्स ने जो मदद की है फिल्म बनाने में, मैं हर एक्टर को वहां ले जाऊं. बट जैसे रेगुलर फंक्शंस हैं, जैसे म्यूजिक लॉन्च था तो उस पर करीना थी, अर्जुन थे, छोटा बच्चा था, अरमान था, सारे एक्टर्स थे, सतीश भाई थे, दिलीप ताहिल साहब थे. सो वेर एवर द रेगुलर एरियाज आर, दे मोस्ट सर्टनली गोइंग टू बी देयर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई थिंक 6 या 7 तारीख के बाद करीना मौजूद भी हैं, थोड़ी अवेलेबल भी हैं. आई थिंक थोड़ी शूटिंग में मसरूफ हैं अभी, और आई एम वेरी क्लोज टू करीना यार. सो आई फील अ लिटिल बैड कि मैं सिर पे बैठ के बोलूं अभी मुझे ये डेट चाहिए. एंड अर्जुन इज डबिंग, एक्चुअली उसकी डबिंग पिक्चर में बहुत जरूरी और अहम है, थोड़ी अलग किस्म की है. तो वो भी जो है बेचारा कुछ 4-3 ज्यादा घंटे डब नहीं कर सकता, थोड़ी आवाज चेंज की भी है. सो ही इज डबिंग, बट वेन एवर आई कॉल देम दे विल कम. बट आई हैवंट रियली बीन कॉलिंग देम एंड आस्किंग देम. मैं कहा एक ही आदमी की नींद उड़े और होश उड़े तो बेहतर है. सारी टीम की अभी नहीं करूंगा, बाद में तकलीफ दूंगा उनको. हाय. मैं ये बस ये जो ऐनक पहनी हुई, बस आंख बंद करके चुपचाप से सो रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है. Hi Shahrukh. Hi Shahrukh. Hi. You're looking very handsome today. Okay Shahrukh, I wanted to know if Ra.One game works. Are we going to see many other games coming up with your upcoming movies like Dawn 2 and all? And any other plans to make games for your movies which are already hit like Dilwale Dulhania and all? मेरे पास सारी फिल्मों के राइट्स नहीं होंगे क्योंकि मैंने प्रोड्यूस नहीं की. यस, डॉन ऐसी मूवी है जिसका गेम बन सकता है, और उसके अंदर ये वाली जो डॉन मूवी है ज्यादा थ्रिलर स्टोरी है कंपेयर टू द लास्ट डॉन. तो उसके अंदर काफी सारे प्लान्स और एक्शन प्लान कर सकते हैं. इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग. आई डोंट नो, आई टॉकिंग टू रितेश एंड फरहान, सो आई थिंक इंडिया गेम्स इज ऑलरेडी इन टॉक्स विद देम. बट या, डॉन 2 कैन रियली लैंड इट सेल्फ, एंड मैं भी थोड़ा सा वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ. आई वुड लव इट टू हैव अ गेम. हर पिक्चर का नहीं हो सकेगा. जैसे दिल वाले ये कह रहे हैं हम गेम नहीं बनाएंगे उसकी. उसमें कैजुअल गेम बन सकता है कि
गाने गाते रहो। अच्छा नहीं, ये कहते हैं ऐसी लव स्टोरीज की गेम्स नहीं बनती हैं, ये कहते हैं। तो आया तो फिर दैट मीन्स यश जी वाली जो अगली पिक्चर है उसकी भी गेम नहीं होगी। हाँ, यू कैन फ्लाई द पिजन्स एंड ऑल। बट यस, आई वुड लव टू। कोई हर फिल्म की नहीं बन सकती शायद, लेकिन कोई कहानी लेंड करे उसको थ्रिलिंग या एक्शन मंच पे, तो आई थिंक यस वी कैन मेक इट। आई वुड लव टू डू इट। मुझे लगता है, और मैं सच कह रहा हूँ ये इसलिए नहीं कि हमारी फिल्म गेम्स के बारे में है, बट जैसे जैसे फ्यूचर अब हमारा बढ़ रहा है, आई थिंक मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है अलग हो रहे हैं। जैसे 10 साल में टीवी इतना आ गया, आई थिंक कंप्यूटर अभी आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, और सोशल मीडिया और गेमिंग जो है बढ़ती जाएगी। सो इट विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, not only like Jyoti was asking me, not only just for the marketing part, but actually as a revenue stream also, which means जब आप सोशल गेमिंग या नेट पे जाकर गेम्स वगैरह करेंगे, रेवेन्यू के नंबर्स इतने बढ़ सकते हैं कि हमारी फिल्म का बजट बढ़ सकता है, एंड वी कैन ट्रूली मेक वेरी ह्यूज इंटरनेशनल लेवल फिल्म्स बिकॉज ऑफ दीज रेवेन्यूज। वेरी फ्यू पीपल नो दिस, मे बी आई सेड इट बिफोर, बट जहां तक मुझे समझ है, गेमिंग की रेवेन्यू जो भी गेम्स वगैरह बनती हैं दुनिया के अंदर आर फार मोर देन फिल्म रेवेन्यू इंटरनेशनली। सो इट्स अ वेरी बिग बिजनेस मॉडल। इंडिया में अभी शुरुआत है, इतना फैला हुआ नहीं है, लेकिन जैसे वक्त बढ़ेगा, यंगर होती जा रही है जनरेशन, आई थिंक दे विल टेक ऑन टू ऑल दिस। आई एम सॉरी, एक्चुअली उनके चिट्ठी अवतार में जैसे वो करते हैं, बिकॉज हाँ, मतलब आधा घंटा पौना घंटा वो आए थे, और उनकी बेटी सौंदर्या जी ने सारी शूटिंग हमारी हैंडल की, क्योंकि हमको हम बहुत ओवरवेल्म हो गए थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कल मैं रात को 4:30-5 बजे हम साउंड कर रहे थे रसूल पुकटी साहब के साथ, जो हमारे साउंड इंजीनियर और डिजाइनर हैं, और तो हम बाहर बैठे हुए थे, एंड वी वर ऑल फीलिंग गूस बम्प्स। हमारे जितने एडीज थे, उन्होंने कहा सर मैं अपने स्टेटस पे लगता रहता हूँ कि पिक्चर हिट है, अब तो सुपर हिट है इंशाल्लाह। इतना आई कैन टेल यू, व्हेन आई वॉकड ऑन द सेट एंड सडनली यू नो 15 टेराबाइट द साउंड केम, इट वाज वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग। मुझे ऐसा लगा कल कि जिस प्यार से और जिस खुशी से हमने ये फिल्म बनाई है, वो कुछ 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। एंड अभी इतना मैं उनकी तारीफ के पुल बांध सकता हूँ यहाँ पे। उनकी जो बेटी थी वो 8 बजे शाम को यहाँ से वापस गई, दोपहर को घर आ गई हैं, उसको एडिट कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वक्त नहीं है वीएफएक्स करने का। तो उनकी पूरी कंपनी और टीम जो है हमारी मदद कर रही है, और कल 2 दिन वो हमारे घर में बैठ के उसको एडिट करेंगी। एंड आई कैन टेल यू द अमाउंट ऑफ लव एंड प्रोफेशनलिज्म रजनी सर एंड हिज होल फैमिली हैज शोन। आई एम एक्सट्रीमली टच। मैं सिर्फ उनके लिए दुआएं कर सकता हूँ। ही इज genuinely one of the greatest human beings I have met in all my life, really. Okay, we'll just take the last 2 questions now. Last 2 questions, please. Last 2 questions. कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में कुछ बताएंगे कि रावण भी कोशिश करता है कोई स्टंट करने का, लेकिन एक्चुअली वो स्टंट सिर्फ रजनी सर कर पाते हैं। क्या कुछ ऐसा सीन है फिल्म में? हाँ, बड़ा फनी सीन है एक्चुअली। हमने लोगों को दिखाया था, तो मैंने वो सीन मैंने एक्चुअली जब हमने ये डिवाइस किया था, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उसके अगले दिन ही न्यूज आई थी कि रजनी सर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, और मुझे तब लगा था कि शायद जैसे अमूमन बुखार या कुछ होता है, देन गॉट टू नो कि थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है। तो वो सीक्वेंस जो था बहुत मेरे को, इट्स अ वेरी फनी सीन वेयर आई एम ट्राइंग टू सेव करीना सोनिया इन द फिल्म, और बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो सारे गुंडे हैं वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हैं। एंड देन सडनली चिट्टी द रोबोट एंजिरन कम्स, एंड मैं पूछता हूँ करीना से कि ये कौन है, एंड जो करीना का रिएक्शन है कि रजनी सर कौन है या चिट्टी कौन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड उसमें एक्चुअली इवन छम्मक छल्लो के अंदर जो मैं डांस करता हूँ, ऐसे वो इसको शमला बोलते हैं, उसको शमला बोलते हैं, ऐसा गले में जो पहनते हैं, ऐसा गमछा सॉरी, शमला क्या होता है यार? हाँ, उसी तो गमछा टाइप जो मूवमेंट है और जो वॉक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जीवन जो है वो सब चीजें रजनी सर को देखकर ही सीखता है, उसके प्रोग्राम में चले जाती हैं। तो छमक छल्लो में जो डांस भी करता हूं मैं, थोड़ा सा उसी से टेक ऑफ है। सो बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे हिसाब से वन ऑफ द फनीएस्ट सीन्स इन द फिल्म। फनीएस्ट मीन्स इट्स अ ट्रिब्यूट टू रजनी सर, बट बिसाइड्स दैट इट लुक्स लाइक रियली स्वीट एंड नाइस। आई थिंक एवरीबडी विल रियली एंजॉय इट। It's really very nice. रावण का प्रमोशन कर रहे हैं, क्या आप बिग बॉस में भी जाएंगे रावण का प्रमोशन करने? और हमने सुना है कि आप घर में भी एंट्री करने वाले हैं।
नहीं, मैं आई थिंक वहां नहीं जा सकूंगा। अब बेहोश ही हो जाऊंगा मैं अगर हर जगह मैं वो उस दिन मैं लिटिल चैम्प्स पे था। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं पुनीत साहब, और जी वाले अपने स्टार प्लस में ऋतिक हैं, और इंडियाज गॉट टैलेंट में किरण जी और धर्म जी। तो मैंने सबको हाँ कह दिया। मुझे पता नहीं था कि सब सेम दिन पे ही हैं, और रियली मुझे नहीं मालूम था सब सेम टाइम पे आएंगे। मैंने कहा नहीं मैं सब शोज पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक दो उसमें देखे भी हैं। डुगू ने पहले भी बोला था मुझको। तो सडनली वो एक ही दिन पे सारे के सारे आ गए, और वो कुछ GQ का अवार्ड भी फंक्शन था। तो मुझे मालूम नहीं था मैं किस शो पे आ रहा हूँ, किस शो से जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, किस पे नाचना है, किस पे गाना है। When I asked my household and everyone, मैं ठीक ठाक क्या? तो उन्होंने कहा हाँ तुमने काफी अपने आप को बुद्धू बनाया उन शोज के ऊपर, बट इट वॉज एंजॉयबल। बट आई थिंक मैं KBC पे जाऊंगा, बिकॉज मेरा खुद का बहुत शौक है, मेरा लगाव है KBC से। सो आई विल गो देयर एंड बहुत मजा आएगा अमित जी के साथ। आई डोंट थिंक मैं बिग बॉस पे जा पाऊंगा, और उनके क्या मुझे समझ नहीं आता, कमरे वमरे में तो जाऊंगा ही नहीं मैं। और दूसरा कौन सा पूछा आपने? नहीं, आई डोंट थिंक आई विल गेट टाइम ओनली यार, मुझे पता भी नहीं है कब है। आई थिंक 7 तारीख को मैं KBC अटेंड कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आई थिंक आई एम आउट ऑफ द टाउन एंड सिटी टूर्स। वी आर गोइंग फॉर सिटी टूर्स। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गो देयर, दो आई वुड लाइक टू। मैंने एक दिवाली का शो भी किया है स्टार प्लस के लिए। Yeah, I think these are the ones I'll be able to attend now. No. Shahrukh, okay, that's it for the question answers now. Are we going to see Lady Gaga at the premiere, Shahrukh? No, we were not able to, speak to the management and get there, because our premiere is 25th in London, and at that point of time when we were discussing it, it was to be able to manage to get some song done by Lady Gaga. But that, like I said, it didn't turn out. We didn't have the time and we could not manage it. So that whole thing is not related in any which way to the film anymore. Okay, we'll stop here now. I'm sorry, but we'll stop with the question answers now. I would now like to invite the electronic media to come ahead and take a bite from Mr. Esake. But for the rest of you, sorry, वो था ना यार, एक मिनट, sorry, हमारा remaining press, एक सेकंड, हमारा एक कंपटीशन है यार, क्योंकि ना ऐसा हमने एक मिनट रुकना यार, नॉट दैट हम समझते हैं आप अच्छे सवाल नहीं पूछते लेकिन हमने सोचा है कि जो मार्केटिंग है वो हम जर्नलिस्ट तक पहुंचा दें। तो जो बेस्ट 2 क्वेश्चन है उनको मैं जो है हमारा एक कलेक्टर्स फिगरीन है जो मैंने ऋतिक रोशन को दिया उस दिन, तो 2 बेस्ट क्वेश्चन वालों को वो फिगरीन मिलेगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो साथ वाले को बेच दीजिएगा आधे प्राइस पे। बट सो 2 क्वेश्चन कौन से हम चूज करें? या अच्छा मैं ऐसा करता हूँ 3-4 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, जो अच्छे होंगे उसमें से मैं 2 को चूज कर लूंगा प्लीज। सो इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। Okay, we'll have 3 more. मल्टीप्लेयर तो यार मैं अपने बच्चों के साथ ही खेलता हूँ एक्चुअली, क्योंकि द बेस्ट प्लेयर्स टू हैव ऑन योर साइड आर चिल्ड्रन। रावण तो गेम में विलन है ना यार, वो थोड़ा ना प्लेयर बन के खेलेगा। रावण तो गेम में खेलेगा। हम तो रावण को ही मारेंगे यार प्लीज। अगले 1.5 महीने तक हर फ्राइडे से सैटरडे संडे रावण को ही मारना प्लीज जाके। No, never यार। I've never like sometimes मैं अभी आ रहा था यहाँ पे तो इंडिया टीवी पे मेरा एक प्रोग्राम आ रहा था। इंडिया टीवी वाले हैं यहाँ कोई? तो इंडिया टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि शाहरुख खान जो है जोक जो करता है वो कितने खराब होते हैं, और हमें शर्म आ जाती है जोक सुन के। तो मैं तो ये बात भी नहीं, मैंने कहीं पे कुछ बोल दिया था ऐसे मजाक हो सकता मैं कल या परसों, तो मैं अब डर जाता हूँ ऐसा मजाक करने के। तो मैंने कभी भी क्या पोर्न X रेटेड A रेट, मुझे पता भी नहीं इसका मतलब क्या है यार। मैंने कभी कोई ऐसी गेम लेने की कोशिश नहीं की है। हमारी गेम जो है G रेटेड है, मतलब जनरल फॉर यूनिवर्सल। तो मैंने कभी भी कोई भी ऐसी गेम कभी भी लेने की कोशिश नहीं की है या खेली है, या मैं कभी भी कोई इंटरनेट साइट पे ऐसा नहीं गया हूँ जिसमें मैं बड़ा फैमिली मैन हूँ यार मैं अब अच्छी बातें ही करूंगा, मुझे बहुत डांट पिटती है। Sorry, let me ask, the girls are screaming something from there. I like, my personal games are sporty games. I like football, FIFA the best, and street soccer. And now I played Gods of War to get little inspiration for Ra.One. But my favorite game all time is either tennis or it is FIFA.
Angry Birds, yeah. Sorry? नहीं, मर्चेंडाइज तो हमारा अपना है यार. ये मर्चेंडाइज हमने किसी को भी नहीं दिया. ये हमारी साइट पे है. H&M एक एंटरप्राइज कंपनी है, वो हमारे लिए बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. बट मेरा शौक ज्यादा बिजनेस से ज्यादा ये है कि हम ये नई चीजें शुरू कर दें. मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगले 5-7 साल के अंदर हर कोई जो है मार्केटिंग के लिए ये सब नई नई चीजें आनी पड़ेंगी हमारे देश के अंदर. सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट आई कैन पार्टिसिपेट एज वन ऑफ द बिगिनर्स ऑफ ऑल दिस. मैं ये नहीं कहूंगा कोई एक्टर कॉपी करता है या प्रोड्यूसर कॉपी करता है, बट दिस इज गोइंग टू बी द सिस्टम ऑफ मार्केटिंग. आई थिंक मर्चेंडाइजिंग is going to be a very, very important thing. Gaming is going to be a very, very important thing. And यही लोग ट्रैक करते हैं, इनका बढ़ना multi-million dollar business है. So they are tracking it, and if they feel that they can, you know, Bollywood से बड़ा कुछ भी नहीं है क्रिकेट और बॉलीवुड से ज्यादा. तो अगर बॉलीवुड कोई फिल्म मिलती है इनको, तो इट बिकम्स इन देयर हित, इनके इंटरेस्ट में हो जाता है कि ये उसको आगे बढ़ाएं. सो मैं क्या ट्रैक करूंगा? आई थिंक दे विल ओनली मेक श्योर दैट इट गोज फॉरवर्ड. इट विल बेनिफिट देम एंड इट विल बेनिफिट अस. सो सुपर हीरोज अमूमन सेम ही होते हैं, लेकिन जीवन जो है बिजली से बना हुआ है. एंड उसके अंदर मैं दिखाता हूँ यार, ये मेरी बड़ी फेवरेट डॉल है ये मेरी यार. ये कभी ऐसा लाइफ में फिगर नहीं बना है. और मैं बिजली से बना हुआ है, कंप्यूटर से बना हुआ है. इसमें जो पावर है वो बिजली की है एंड उड़ सकता है पार्को टाइप. और इसके जो जूते हैं उसमें मैग्नेटिक सक्शन डिवाइसेस हैं. एंड आई थिंक ही कैन इवन सी थ्रू वॉल्स इफ ही वांट्स टू एंड प्रोजेक्ट थिंग्स. सो लॉट ऑफ थिंग्स. एंड बिकॉज आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन इज बीइंग asked to me which is really nice, so I'll give it to that lady who asked me about which game I like the best. So please come forward, darling, and take this. एक सेकंड पहले वो आ जाए ना. Photo के लिए I'll give it to you later. You sit, I'll give it to you later. अब ऐसा नहीं कहना लेट आया हूं तो तोहफा लेके तुम लोगों को मैं पटा रहा हूं, ऐसा. तेरा सवाल तो कभी अच्छा नहीं होता. ऐसे नहीं फिर आपको ये खरीदना पड़ेगा. You'll have to go on to Ra.One movie site एंड वहां से आपको खरीदना पड़ेगा जब ये आएगा. अभी सिर्फ के 2000 बने. हाँ, ये कि अभी इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हूं तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरी फॉरवर्ड है. दिवाली डिस्काउंट भी है और टिकट भी दे रहा हूं मैं इसके साथ. ओके, सो इज एनीवन आस्किंग मी और शुड आई लीव नाउ विद माय जीवन गिफ्ट? नंबर 2. नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करते हैं यार. वो हम इतना डिसाइड नहीं करते एक्चुअली. और लंदन का जो डिसीजन था बहुत पहले हो गया था. सो आई कांट चेंज दैट. फिर लंदन में 25 को है और आई थिंक दुबई में 24 को डिस्ट्रीब्यूटर ने डिसाइड कर लिया है. तो मंडे को प्रीमियर करना थोड़ा जल्दी हो जाता है मुझे लगता है. हाँ, तो मुंबई में मे बी मैंने कोशिश कर रहा हूँ. आई बीन आस्किंग माई फ्रेंड्स कि शायद फ्राइडे सैटरडे को जाने से पहले मैं सब 200-250 दोस्तों को बुला के, नॉट लाइक अ प्रीमियर बट कैजुअली सबको बुला के फिल्म दिखा दूंगा मैं यार. बिकॉज प्रीमियर के लिए फिर तामझाम, सिक्योरिटी, फिर वो रेड कार्पेट, बहुत तकलीफ हो जाती है और फिर खुद एंजॉय नहीं कर सकते. सो आई थिंक वी हैव लंदन, टोरंटो एंड दुबई. बट आई लाइक टू शो माई फ्रेंड्स एंड द इंडस्ट्री हियर. सो एंड आई लाइक टू सी, एक्चुअली आई इवन रिक्वेस्ट यू, प्लीज सी इट इन 3D. It looks very interesting. So please, whenever you get a chance, see it in 3D. I'll try and show it to you guys also, inshallah.
Thank you very much. So, Thank you everyone. Thanks a lot. Can I now ask the electronic media to please come ahead for some bites from SRK? Sorry? Also, for electronic media will come here and ask for some bites. Oh, okay. The electronic media. This one. This. Please. Okay, so what do I say? So do you have? Second, कोई पूछ ही नहीं रहा है मुझसे. नहीं. You have another prize. One bad quality that I want to get. दुशहरा से थोड़ा बाद में मैं सोच रहा हूँ फिल्म के बाद मैं कोशिश करके सिगरेट पीना छोड़ दूँ. I really want to give up smoking here. Now I think it's becoming worse than and because my daughter also asks me the same thing, that's why I will consider a good question and give you the second present. Come here, sir. Sir, अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, कहा रिलीज के बाद छोड़ दूंगा मैं अभी. Where's the other one? I'll give it to this young lady here. Okay. The box here. Can I have the box? Where are you, girl? Where's the young girl gone? लड़को तुम सवाल ही नहीं पूछ रहे ना फिर यार कोई अच्छा यार. नहीं, just this is the packet actually. This is how it is. Okay. I'll do. On the media hand. So is it over? Okay. Yes, sir. Okay. Thank you very much. Thank you so much, everyone. Before we wind up, let us wish all the luck and success to Ra.One for the upcoming release on 26th October. And after that, and even before that, keep playing the game. Thank you.